Hello, guys. Welcome to Atlas Podcast. This is our first live stream, and I'm very excited. So, as you can see by the thumbnail, we are going to be discussing about KKR. Just let me check the audio once. Let audio तो ठीक लग रहा है. Okay. So, as you know, IPL अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में है. As we know, ट्रेड विंडो से रिलेटेड कौन जा रहा है, दूसरी टीम में कौन नहीं जा रहा है. लॉट ऑफ एक्साइटमेंट इज इन द एयर और हम क्रिकेट फैंस को कंटेंट भी मिल गया है. बट look, the first team that we are beginning our discussion with, first of all, let me introduce myself. I'm very sorry. I'm Hamad Ashmi, and on Athlos podcast, we focus on other sports as well. Cricket हमारा भी primary target है, and we focus on other sports like American football, soccer, and Olympics and other sportsmen as well. अभी हमारा target IPL है. So as you know, with the thumbnail, we're discussing about KKR. KKR को हमने इसलिए चूज किया because right now the team which is at the highest of point of discussion is KKR. संजू सैमसन से रिलेटेड KKR में उजारे या नहीं, whether it is KL राहुल, सब कुछ बहुत ज्यादा is in the talks. So let's discuss it, and wait, let me just open my presentation. There you go. So हमारा मुद्दा क्या है डिस्कशन का? एज यू कैन सी, करंट न्यूज जो चल रही है अभी संजू सैमसन से रिलेटेड एंड ट्रेड से रिलेटेड, उस पे हम अपने पर्सनल व्यूज देंगे एंड डिस्कस करेंगे. वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट द रिलीजेस कि कौन से प्लेयर्स को रिलीज कर सकती है केकेआर, प्लेइंग 11 plus impact player after releases, so the potential playing 11 which could be, and possible auction targets. So I think let's get into it. I'm sorry for the blurred image क्योंकि मुझे कोई भी clear image नहीं मिली, but this is the first point which we're going to be talking about, which is Sanju Samson or KL Rahul coming to KKR. So Sanju Samson का तो सभी जानते हैं that it has been almost but confirmed that he is going to be leaving Rajasthan Royals, and relations अच्छे नहीं हैं. So many teams including KKR are targeting Sanju Samson. KKR and CSK are basically on the top of the tree कि संजू सैमसन उनको चाहिए. So my personal thoughts would be Sanju Samson would be a very good addition into KKR, and KL Rahul, if he comes, yes, then he'll be an absolutely fantastic addition. The thing which I think मतलब इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि 2024 में when KKR won the title, there were, in my opinion, and बहुत सारे लोगों के ओपिनियन होंगे, 3 important players थे जिनको अभी भी अच्छे से रिप्लेस नहीं कर पाए. एंड आई विल टेल यू हाउ. द ट्रिपल एस, दैट इज सॉल्ट, श्रेयस एंड स्टार्क, इन तीनों को ये रिप्लेस नहीं कर पाए. सी सॉल्ट की जगह दे ट्राइड टू ब्रिंग डिकॉक एंड गुरबाज को भी लाया गया, बट नन ऑफ देम सक्सीडेड. एंड श्रेयस की जगह दे गॉट रहाणे. रहाणे हिमसेल्फ इज अ वेरी गुड प्लेयर, बट एज अ कैप्टन श्रेयस इज नॉट क्लोज टू श्रेयस. श्रेयस ने फिर से Punjab, he led his team into the finals. This year it was with Punjab, last year was with KKR. So Shreyas Iyer को भी replace नहीं कर पाए. And Stark की जगह they tried bringing Nokia and Spencer Johnson. Nokia is someone who is a very injury prone player and he is way past his prime. Spencer Johnson is someone who has never ever played really well in the IPL. He is one of those players जैसे डैनियल सैम्स, राइली मेरेडिथ, जे रिचर्डसन, ऐसे लोग जो सिर्फ बिग बैश में उनका ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा रहता है, बट आईपीएल में आते ही उनका ट्रैक रिकॉर्ड काफी खराब हो जाता है. सो स्पेंसर जॉनसन इज वन ऑफ दोस प्लेयर्स. एंड सो ये जो 3 प्लेयर्स है ना, दैट इज सॉल्ट, श्रेयस एंड स्टार्क, इन तीनों की कमी ये पूरी नहीं कर पाए हैं. सो नाउ व्हाई आई थिंक दैट संजू सैमसन और केएल राहुल. ना अच्छा, एक और चीज और, KL Rahul could come in, but I highly doubt that Delhi are going to release him this अगले साल या उससे अगले साल होता है तो वो अलग बात है, but this year I highly doubt that they'll release him. Sanju Samson
का बहुत हाई चांस है that he will be going to KKR. And the thing is, look at this. इस पे पहले हम आ जाते हैं and then we'll go to the previous slide. As you can see, the probable releases. Spencer Johnson will most likely be released. So will Anrik Nokia. So that frees up a lot of money. Also, both the wicket keepers, that is Zaimanullah Gurbaz, Quinton de Kock will be released most likely. Gurbaz का sure नहीं कह सकता हूँ, but it is most likely that he will be released. And Moin Ali is a very utility player, and they actually used him ताकि उनकी बैटिंग लाइनअप जो है नंबर 9 तक जा सके. So Moin Ali is a good option, but as I said, he is way past his prime. Age has caught up to him, so maybe not the best option, which is why I think to free up the purse a little bit, Moin Ali should be released. वो अलग बात है अगर उनको बाद में जाके लेते हैं. Shivam Shukla, as you can see with that pie sign, that means he was a temporary replacement in the league, that which is why he'll compulsorily be released. अब यहाँ पे एक important और बड़े interesting नाम है वेंकटेश अय्यर. Now Venkatesh Iyer was bought for 23.75 crores by KKR, and पहले लगा कि यार इतने अमाउंट में लिया है, कुछ सोच के लिया होगा, जाहिर सी बात है. They wanted to make him the face of the franchise, and they मतलब clueless लगी थी कि यार honestly, if I think about the two most clueless franchises in the auction and after the auction, it has to be KKR and Rajasthan Royals, जो दोनों टीमें अभी involved हैं in a way. Look, Venkatesh Iyer को इतने amount पे लेना, I thought they would maybe play him, maybe make him the captain, maybe let him open, या फिर at most number 3 पे खिलाएंगे. Maybe they'll let him bowl a little bit because he is a proper all-rounder. अगर आपने domestic देखा है, so he's a very very good all-rounder for MP. He is a very good bowler and he gets you handy wickets and economy भी ठीक ठाक रहती है. But KKR did not use him, मतलब बहुत बुरी तरीके से यूज किया. The spot which is his best, which is opening or either number 3, these are the spots जिसमें वेंकटेश अय्यर ने सेंचुरी मारी KKR के लिए. Yet they were playing him at number 4 और number 5, शायद number 6 पे भी खिला चुके हैं. And at one point, I'm pretty sure they dropped him in a match. That was one of the biggest problems. Now, बहुत ज्यादा सुनने में आ रहा है कि KKR may release Venkatesh Iyer because you can see the price 23.75 crores, बहुत ज्यादा होता है. So if they can release Venkatesh Iyer and they can guarantee that they can get him at a lower price, at least maybe 15 crores or something like that, and they go after Sanju, so then things could get sorted. Which brings me कि Venkatesh Iyer को I think they will have to release, because if they do not release Venkatesh Iyer, they'll be left with the amount of 16 to 17 crores rather than 40 to 41 crores. So Venkatesh को release करना ही पड़ेगा in my opinion to free up that purse if they really want to get Sanju Samson. And then when they get Sanju, they should go for Venkatesh again and buy him for a lesser amount. अब उस बात पे आते हैं वापस संजू सैमसन की. संजू सैमसन क्यों मेरे हिसाब से इज अ मच इम्पोर्टेंट प्लेयर. एज आई सेड, द ट्रिपल एस, सॉल्ट एंड शेयर्स और स्टार्क को अभी साइड में कर देते हैं. संजू सैमसन इज अ टाइप ऑफ प्लेयर which can fulfill the roles of Shreyas and Salt both. Shreyas the captain and the batter, and Salt the opening wicketkeeper batter. Yeah, number 3. But anyways, a very good batter and a wicketkeeper, जिसकी कमी ये पूरी नहीं कर पाए. So Sanju, in my opinion, and as I said, राहुल का तो doubtful है कि he will come. Sanju Samson is the likely option. So Sanju के पीछे जाना is going to be very very good. In my opinion, so they'll have to free up the purse. Venkatesh Iyer को release करना पड़ेगा, get Sanju Samson and then get Venkatesh Iyer. अच्छा, और आज सुबह जो रिपोर्ट्स आई हैं, KKR ने राजस्थान से टॉक्स की हैं कि they are ready to give either of these two players in return of Sanju Samson. कि आप हमको संजू सैमसन दो, हम आपको या तो अंकुश रघुवंशी या रमनदीप सिंह देंगे. And in my opinion, this trade
would benefit both the teams. संजू का तो obviously benefit करेगा ही KKR को, because as we talked about that triple S वाला, and he'll obviously fulfill those two roles of salt and shares जो वो पूरी नहीं कर पाया KKR. If Ramandeep or Ankrish, let's suppose अभी के लिए Ankrish, if Ankrish goes into Rajasthan, they'll have that stability in the top order or middle order. Ankrish usually plays at the number 3 or number 4. कभी कभी number 5 पे भी खेल लेता है. So the problem which Rajasthan were actually facing was after Jaiswal and Vaibhav, and मतलब संजू तो खेल ही नहीं रहे थे, तो they had Ryan Parag coming in at 4, then Jurel, then Hetmer, then Shubham Dubey. You need someone at that number 3 spot. Although they do have options, Luan Pretorius is someone who's a very good option. They will be looking for some other options as well. Nitish Rana is there as well. But Ankrish Raghuvanshi is a future prospect. Itna younger, he is playing so good, a very, very technically sound player. Not a very high strike rate player, which is why he can play that anchor role. Where that is an area where possibly Rajasthan was struggling somewhere. So Ankrish could be a good trade. Coming to Ramandeep, he might even be a better trade than Ankush. मान लेते हैं अंकुश नहीं आता, रमनदीप जाते, राइट. नंबर 3 पे फॉर एग्जांपल नीतीश राणा को खिला लेते हैं लोग. सो राजस्थान विल हैव जायसवाल, वैभव, नीतीश, पराग, जुरेल, हेटमेयर. इसके बाद दे हैड शुभम, बट यहाँ पे दिक्कत आ रही थी बिकॉज you always have to have, even though impact player आ गए, but still there is that importance of a fast bowling or a spin bowling all-rounder, a hard hitting. अब आप देखिए जैसे हार्दिक पांड्या is someone from Mumbai, or for that case Romario Shepherd, and for that case Cameron Green as well, who will be in very high demand in the auction. So these all-rounders make a high impact for you, even though impact player है, and I wholeheartedly believe कि उसको हटा देना चाहिए because it is वो बेकार कर रहा है all-rounders के worth. So all-rounders are very important, and in my opinion, Ramandeep could be a very, very good player who can maybe provide you 2 overs, maybe 3 overs, even someday he can provide you 4 overs. और वो hard hitting चाहिए end में, where that is an area where Rajasthan struggled the most. उन्होंने 4 से 5 मैचेस चोक किए थे. I remember against Delhi, against RCB, against KKR, and Jurel was not in the best of the form. Shimran Hetmer was absolutely horrendous, and Shubham Dubey is still new. He's still fairly new. So if you're trusting a new person with finishing ki bhai 8 ball mein 20 banani, you've got to go hit it out. Cannot work. He has to be someone very gifted. Shubham is a very talented guy, of course, but Ramandeep brings a different dynamic. Also, his fielding is superb. Another area where Rajasthan struggled a lot. Their fielding was horrendous last season. Ramandeep is someone who is a very gun fielder, absolutely brilliant fielder. That is an area where Rajasthan could need Ramandeep, and I think Ramandeep is a far better choice than Ankrish. But if this does not work out, the only logical scenario I see is कि Sanju Samson auction में आएंगे, and then he'll get a very, very high bid, possibly crossing 20 crores. KKR would go very heavy on Sanju, and CSK will be there as well, a couple of other teams as well, maybe Sunrisers. I highly doubt although about them. ईशान किशन से अभी इतनी जल्दी मूव ऑन नहीं करना चाहिए इनको. मेनली 2 ही टीमें हैं, दैट इज KKR and CSK. So KL Rahul और ये संजू की बात करेंगे तो KL Rahul is someone will not come in my opinion, and Sanju is coming to KKR. That is what I believe. 75% chance है कि संजू KKR में आ रहे हैं. So now let's move on as we discuss this. Now this is the possible playing 11 plus impact. Now this is where I'm hope, मतलब मैं ये ऐसा expect कर रहा हूँ या hypothetical scenario कि they do get Venkatesh, right? अभी release नहीं हुआ है. So if we say that Venkatesh is not released या फिर वापस ले लिया, I genuinely believe कि इसको वेंकटेश हैज टू. एंड सुनील नारायण आपको नीचे दिखा वेंकटेश के, क्योंकि अब नहीं चाहता हूं मैं कि सुनील नारायण ओपन करें. ही इज वे पास्ट हिज प्राइम.
एक साल आता है एंड आई नो सुनील नारायण के सबसे अच्छे स्टैट्स ओपनिंग करते हुए ही हैं, बट इट इज हिंडरिंग द बैटिंग ऑर्डर, इट इज लिटरली हिंडरिंग द बैटिंग ऑर्डर. It is better that he can play the role like Washington Sundar plays, that if you need maybe अगर 2-3 विकेट जल्दी गिर गए, then Sunil Narine is a perfect option. He can play spin really well, the tonker of the ball. So I trust him more at finishing. आपने कहा बॉल 1 से जाओ, I don't want that. I don't want him to open in a way. If you want him to go from the ball 1, hit it out of the ground, then I genuinely believe he has to be pushed back to number 7 or 8. I pushed him at number 7. And Venkatesh को open कराना पड़ेगा in my opinion. That is the best way you can bring out the real Venkatesh Iyer. भाई I remember 2021 जब कोविड के बाद यूएई का लेग स्टार्ट हुआ था आईपीएल का, पहले इंडिया में हुआ था, फिर कोविड आ गया था एंड देन इट शिफ्टेड टू यूएई. वेंकटेश अय्यर, मैंने कहा होगा कोई ऐसे ही यार. His first innings, I was so impressed. I was literally very impressed, and he's a very very good batter. यार. Technically बहुत sound है. He can play really fast for you if required. He can play the anchor role for you. And all round skills तो actually बहुत decent है वेंकटेश अय्यर की. But coming to the batting of वेंकटेश अय्यर, he has to open. His best stats are at opening. And अगर आप फिर उससे ओपन नहीं कराए हो तो यार कोई मतलब नहीं है. if अगर मैं कह रहा हूँ कि फिल सॉल्ट को मैं ऊपर नहीं करा एंड आई एम प्लेइंग एट नंबर 4, डजंट वर्क. बहुत ही कम लोग हैं. वन ऑफ देम इज केएल राहुल, क्योंकि अब ही इज डिफरेंट है. केएल राहुल इज अ डिफरेंट प्लेयर. लेकिन एकदम से जब आप ऐसे प्लेयर को करते हो, एंड आई नो ऑल्दो हाँ वेंकटेश डज कम इन एट नंबर 4th और 5th इन एमपी, आई नो दैट. कभी कभार नंबर 6 और 7 पे भी आ चुके हैं, बट दैट इज बिकॉज ही कैन फिनिश देयर रियली वेल. यहाँ पर जब एस्टैब्लिश फिनिशर्स हैं, दैट इज रिंकू, दैट इज रसल, रमनदीप, तो देन व्हाई आर यू प्लेइंग वेंकटेश एट 4th और 5th एंड कभी और 6 पे भी आ गए थे. आईपीएल में जो स्टैट्स हैं वेंकटेश अय्यर के, दे आर द बेस्ट व्हेन ही इज ओपनिंग और ही इज प्लेइंग एट नंबर 3. एंड जो सेंचुरी आई है वो भी इसी टॉप 3 में से आई है. आई डोंट रिमेंबर इफ इट वाज ओपनिंग और नॉट, बट इफ आई रिमेंबर इट, शायद मुंबई के अगेंस्ट आई थी इन अ डे गेम एट वानखड़े, if I'm not wrong. So Venkatesh has to. Now second player blur दिख रहा है, जिसके बाद में as we discussed, it has to be Sanju Samson, and we will be discussing another scenario where they might not get Sanju. Who could be that player? We'll discuss that. Ajinkya Rahane has to be kept. भाई जिस तरीके का खेला अजिंक्य रहाणे ने, he's playing super. He can still play that anchor role for you. He can play quick for you. Last season अच्छा गया था. 1.5 crores में रहाणे was a steal in my opinion. Obviously with the captaincy he was not as good, but वो टीम का भी थोड़ा सा वो रहता है कि टीम was not able to support, ऐसा कहेंगे. अंकुरिश and this is as you can see अंकुरिश and रघुवंशी बोल रहा हूँ. अंकुरिश and रमनदीप, मैं ये हाइपोथेटिकल सिनेरियो लेके चल रहा हूँ कि अभी ये रिलीज नहीं हुआ है, तो what could be if they what could be playing 11 if they are not released, right? Ankush is very good for KKR. He's played really good for KKR. Number 3 पे खिला लो, number 4 पे खिला लो. They can switch between Rahane and Ankush. But Ankush at 4 I feel is a better option. Rinku, भाई please यार, Rinku को number 5 या उससे ऊपर खिलाओ. Because when he plays at 6th or 7th, नहीं वर्क कर रहा है. We are seeing from the last 2 years, Rinku की finishing नहीं चल रही है. Rinku has lost his place in the Indian T20 team as well. Please यार, रिंकू को ऊपर खिलाओ. He needs some balls to adjust. So that is very important, which is why Rinku has to play at 5th. Russell, now Andre Russell की एक चीज कहनी है. We do not know how many more years Russell will play. We saw in the last season that age has caught up. Injury बहुत face कर रहे हैं Andre Russell. He is not able to finish what is expected from him. He is not able to finish that way. बॉलिंग भी बहुत ज्यादा नहीं कराई शायद रसल से. सो यू कैन सी दैट ऑलमोस्ट इट इज टाइम कि ही माइट टेक हिज रिटायरमेंट. ओके, एंड अभी एक्चुअली वेस्ट इंडीज से भी T20 से भी रिटायरमेंट ले लिया है, बट वो तो वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स करते ही हैं. बट स्टिल रसल हैज बीन प्लेइंग इन केकेआर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम.
almost 10 years if I believe. हाँ शायद 10 years हो ही गए. And so age has caught up to him. Same with Sunil Narine. They've really got to find replacements of these two. Cameron Green is a potential replacement for Russell. वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. But as you can see, Russell, Narine and Ramandeep, ये तीन इधर रहेंगे. ठीक है. It is a very good finishing. रमनदीप को ऊपर कर सकते हैं एंड नारायण को थोड़ा सा नीचे ला सकते हैं, बट ठीक है वो स्विचरू कर सकते हैं. रसल हैज टू कम एट 6. अगर स्पिन खिला रहे हैं तो फिर नारायण को बेच सकते हैं, रमनदीप को, जो भी सही है, दे कैन डू इट. बट दिस आई फील इज वेरी गुड. नाउ ये जो दूसरा ब्लड प्लेयर दिख रहा है आपको, दिस इज, मैं इस पे आऊंगा, बट एज यू कैन सी हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती एंड वैभव अरोड़ा. वैभव ऑब्वियसली बीइंग द इम्पैक्ट प्लेयर, वरुण तो रहेंगे ही, हर्षित राणा भी रहेंगे. ही इज established himself as the possibly lead fast bowler of the team. He Stark नहीं है, and he was the lead pacer of KKR last year. So ये तो रहेगा इनका बॉलिंग अटैक. 2 फास्ट बॉलर्स और पोटेंशियली एक्चुअली 4 फास्ट बॉलर्स, 5 अगर वेंकटेश को लूंगा. वेंकटेश से करानी चाहिए बॉलिंग, टू बी ऑनेस्ट. अगर रसल नहीं करे तो वेंकटेश से करानी चाहिए. सिर्फ 2 प्रॉपर फास्ट बॉलर्स, 2 प्रॉपर स्पिनर्स और 2-3 आपके पास पार्ट टाइमर्स, तो कैन डू रियली वेल. अच्छा, और एक्चुअली ये जो ब्लड है ना, यहाँ पे कौन आना चाहिए मेरे हिसाब से, एन ओवरसीज फास्ट बॉलर हु कैन बैट अ लिटिल. क्योंकि वन ऑफ द इश्यूज विद केकेआर लास्ट ईयर वाज कि उनकी बैटिंग पोटेंशियली नंबर 7 पे खत्म हो रही थी विद रमनदीप बीइंग देयर. उसके बाद हर्षित राणा इज नॉट द बेस्ट ऑफ द बैटर्स. आई हैव नॉट सीन हिम बैट रियली वेल. वरुण इज नॉट अ बैटर. वैभव इज नॉट अ बैटर. स्टार्क रहते थे तो थोड़ी सी रेटिंग हो जाती थी. आई फील एट दैट ब्लड स्पॉट एट नंबर 9 there are multiple options, very good options, and kind of like look, Ryden Cars is a very good option. Ben Watches अभी जो सीरीज चल रही है ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका की, he's been very good and he can tong the ball as well at the end अगर रिक्वायरमेंट है तो. Ben Watches is a very good option. And see Ben Watches का मतलब मैं और क्यों प्रेफर कर रहा हूँ Ben Watches, because he's a left arm fast bowler. If you see here, अगर मैं वेंकटेश, रसल, रमनदीप, हर्षित और वैभव को मिलाऊं, there are 5 right arm fast bowlers. Chetan Sakaria is left arm fast bowler, but Vaibhav is better, Harshit is better than Chetan. So in my opinion, they did try Spencer Johnson last year, it did not work out. I believe they should get Ben Washes. So I think this is the last slide, but उससे पहले मैं कमेंट्स देखना चाह रहा हूँ. उमैर हाशमी कह रहे हैं सीएसके फैंस ओनली. सीएसके पे भी हम आएंगे, पॉसिबली कल आएंगे, बट देखते हैं. जीसन एक्स टेक्निकल्स कह रहे हैं सी व्हाट माय ओपिनियन इज, इफ दे ट्रस्ट वेंकी सो मच then make him open permanently with any existing opening partner. Also KKR must treat him as an all-rounder. Absolutely yes, I agree to this comment. This is something which I did talk about in the starting or abhi bhi. I mean हाँ opening में I would say that maybe as I said Sanju has to be there and Venkatesh, yes obviously you'll have to make him open, और all-rounder तो treat करना ही पड़ेगा. if आपने इतना लिया है तो there is no way. Another thing is because look, I'll have to discuss this. ऋषभ पंत को लिया था 27 करोड़ में because he provided you 3 things. He can captain the side, he can keep the wickets for you, and he is a destructive batter. ठीक है. इसके अलावा श्रेयस अय्यर, he is a very good batter of spin obviously and of pace as well, and a very good captain. And in my opinion, a very good captain is the most important thing. So वेंकटेश अय्यर पे अगर आए, एक मिनट कमेंट लगा लो वापस. हाँ, केकेआर मस्ट ट्रीट हिम एज एन ऑलराउंडर एज आई एग्रीड. लुक, जिस तरीके से सीजन गया था केकेआर का एंड वेंकटेश अय्यर का, it was very clear that they were looking at Venkatesh Iyer as a batter only, which does not work. Obviously नहीं करता वो.
सो वेंकटेश को एज एन ऑलराउंडर खिलाना ही पड़ेगा, ओपनिंग पे खिलाना पड़ेगा, एंड दैट इज द ओनली वे दैट इट वर्क्स. सो यस, आई एग्री टू दिस कमेंट. ओके, तो लास्ट स्लाइड पे चलते हैं. ऑक्शन टारगेट्स, एज आई सेड, संजू सैमसन. अच्छा, जिस पे स्टार दिख रहा है आपको, दैट मींस एक कंडीशन है उस पे कि वो रिलीज होंगे या नहीं होंगे. संजू सैमसन पे एक्चुअली शायद स्टार हटा ही देना चाहिए, बिकॉज एज आई सेड इट इज ऑलमोस्ट बट कंफर्म दैट ही इज गोइंग टू बी रिलीज फ्रॉम राजस्थान. केएल राहुल प्रीवियस स्टार है. देयर इज अ स्मॉल चांस दैट ही मे बी released या traded, but I doubt it. Bent washes, as I talked about, they need a left arm fast bowler overseas who can tong the ball a little bit. Will O'Rourke, I'll tell you one thing. He played for Lucknow. Will O'Rourke will be released as he was a temporary replacement. So he will be released. He will be back into the auction. So they might want to say कि हमको वो height try करनी है Will O'Rourke की, like they used to have Morny Morkel back in the day. With that height, with that, you know, arm length, with that pace. हालांकि उतनी तेज पेस नहीं है कैमरन विल ओ'रॉर्क की, सॉरी, एज कंपेयर्ड टू मॉर्नी मॉर्कल, बट यस, विल ओ'रॉर्क इज अ वेरी गुड ऑप्शन. अगर आप वो एक गेम हटा दो आरसीबी के अगेंस्ट जिसमें 70 से ऊपर रन पड़े थे, he was very good for Lucknow. So Will O'Rourke could be a very good option as well. And Cameron Green, as I talked about, Cameron Green is someone whom I doubt that they will go for. I doubt KKR will go for Cameron Green, but I think they should go for. As I talked about, you can see Andre Russell. We do not know कब तक खेलेंगे. Potentially will play for 2 more years this cycle. They should move on from Andre Russell. ऐसा सुनने में भी आ रहा था. So Cameron Green could be a very good option if they can somehow manage to bring him. उससे क्या फिर बैटिंग में थोड़ी सी स्टेबिलिटी आएगी. एंड अच्छा, one more thing. Let's suppose that they are not able to bring Sanju KKR. Cameron Green has to be brought. फिर वो ओपनिंग का स्लॉट जो है ना, you have to have Cameron. You have to have Cameron Green. He's a very good batter. ओपनिंग में तो बहुत अच्छे स्टार्ट्स है. He came into the IPL as an opener. Remember the India versus Australia series? They were opening with him. बहुत ही बढ़िया खेल रहे थे, एकदम 200 के स्ट्राइक रेट ऐसा कुछ. And a very good bowler. RCB used him more as a bowler. Mumbai used him more as a batter. KKR, if they bring him, can use him as both. And in the recent series versus South Africa, he's been very good. So yeah, that's pretty much about. Oh नहीं, but एक ग्रीन के लाने से यहाँ पे फिर विकेट कीपर नहीं रहेगा. ओके, संजू इज द लाइकली ऑप्शन यार. बट एज आई सेड, लुक, ग्रीन को लाना आई वुड प्रेफर इफ दे कैन समहाउ मैनेज थिंग्स. कि अगर लेट्स सपोज अंक्रिश चले जाए, दे कैन ब्रिंग ग्रीन एंड दे कैन ब्रिंग संजू एज वेल, बट वेरी डाउटफुल. दोनों 20 करोड़ के अराउंड तो जाएंगे ही जाएंगे. सो आई मीन डाल लिया मैंने नाम, बट I highly doubt that they will get Green. Arshad Khan, as I said, Ben Washes की जगह Arshad Khan को खिलाया जा सकता है. Very good Indian option. Just the thing is, I do not know if Gujarat will release him or not. They will not, I think so. So yeah, डाल लिया मैंने नाम, मुझे याद आ गया तो मैंने डाल लिया था. Finn Allen, Ben Duckett, Jamie Smith. This is the point where I want to come. Sanju Samson, if we assume that KKR are not able to get Sanju, CSK ने ले लिया संजू को, मान लेते हैं, ठीक है. Now what? और हम मान रहे कि राहुल को भी रिटेन किया, तो भाई जमेले में फंस जाएगी यार KKR, because they'll have lost both of these. So in my opinion, if and I wholeheartedly believe कि KKR are the leading franchise to get Sanju Samson. There is, क्योंकि ऑक्शन का कोई प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं बॉस, कब क्या हो जाए. ऑनेस्ट, टिम डेविड जैसे लोग 3 करोड़ ले जाते हैं, ब्रेविस जैसे लोग अनसोल्ड हो जाते हैं, वेंकटेश अय्यर और ऐसे लोग 20 करोड़ से ऊपर जा रहे हैं, कभी स्टार्क 20 करोड़ से ऊपर ले जाते हैं. सो यू डू नॉट नो द डायनामिक्स ऑफ ऑक्शन. भाई जो लोग जाते हैं उनको खुद नहीं मालूम होता है, हम क्या बोलेंगे. सो वी हैव टू अज्यूम ईच एंड एवरी सिनेरियो. सो इफ वी से दैट संजू, if KKR will not be able to get Sanju, I think Finn Allen, Ben Duckett और Jamie Smith का actually मैंने कहीं पढ़ा था, I'm not sure, he'll not be able to
टेक पार्ट, मतलब कोई भी टीम ले नहीं पाएगी, बिकॉज आई थिंक ही डिड नॉट रजिस्टर इन द ऑक्शन लास्ट ईयर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. बट अगर जेमी स्मिथ है तो दे शुड गो फॉर हिम. And Finn Allen or Ben Duckett, as I said, Finn Allen played really good in the MLC, and I mean, I've been waiting to, uh, I've been wanting to see him for a long time. And I mean, I thought RCB वाले chance देंगे, they did not. So it's fine. I mean, दूसरी टीम ने भी नहीं लिया, but KKR can take him as a backup opener. If they get Sanju, they can get Finn Allen as a backup opener. Maybe Ben Duckett को तो यार मैं देखना चाह रहा हूँ IPL में किसी दिन, because the day Ben Duckett comes into the IPL, आग लगा रहे हो भाई वो. He is that good. हमने देखा है भाई पूरे टेस्ट सीरीज में बेन डकेट ने बहुत परेशान किया, और जेमी स्मिथ ने, ये दो भाइयों ने, ये दो जो है ना, इन दोनों ने इतना परेशान किया इंडिया को. और हम जो लोग घर से देख रहे थे भाई, डर लगता था जब ये दोनों बैटिंग करने आते थे. डाकुओं जैसी बैटिंग यार, और एकदम तेज खेलना, अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलना, जम के खेलना. बोथ ऑफ दीज कैन ओपन. जेमी स्मिथ का ओपनिंग पे आई डाउट. I mean, he can open if they ask of him, but Ben Duckett, Finn Allen are the better options. देखते हैं क्या होता है. If Sanju doesn't come, then they have to, मतलब push करना पड़ेगा कि इनको चाहिए. If Sanju comes in, they can get either of these as a backup option. बाकी लवनीत सिसोदिया तो है ही in the team, and I do not believe that he'll be released. He's a very good batter, and इंडियन ऐसे विकेट कीपर बैकअप्स की जरूरत पड़ जाती है किसी ना किसी दिन. Now let's come to the fast bowlers again. Gus Atkinson is someone, as I said, he can hit really well. Acha, another interesting point. If I remember, KKR did actually buy Gus Atkinson in the IPL 2024 auction, because फिर क्या है, actually, if I'm not wrong, they did. दुश्मंत चमीरा थे, आई गेस, द रिप्लेसमेंट ऑफ आपके Gus Atkinson. So they did buy Gus Atkinson. Maybe they might go for him again, and I would not mind. Gus Atkinson is a very good option. So yes. And Bryden Cars की बात करें, Bryden Cars पर ये भी डिपेंड करता है KKR release him or not. If they do, KKR बोलना, sorry, SRH releases him or not. But if SRH releases him, Bryden Cars is a very good option, to be honest. Rafiq Salam, most like in all likeliness, RCB is going to release Rafiq to make up that purse, or maybe buy him at a lesser amount. Rafiq Salam is a very good option, as I said, to tong the ball, hitting चाहिए हो, या फिर middle overs में you need someone. Rafiq Salam is a very quality bowler. Gudakesh Modi, now this is someone who I believe would be the next Sunil Narayan. I have seen his game when he has played for West Indies. I've seen his game where he has played in the CPL. He's a very good player. He can open if you ask of him. He can play in the lower order if you ask of him. He can play at number 4, number 5. Why same? And he's a very good spin bowler. So Gudakesh Modi could be someone who could maybe be a potential backup of Sunil Narayan, या future replacement of Sunil Narayan, as they they have tendency to buy West Indian players, KKR, जिनका उधर से connection है. In Kolkata Knight Riders, they've got Akil Hussain, if I'm not wrong. नहीं, Akil Hussain को नहीं लिया था. Kevin Allen को ले चुके हैं, but इनमें से किसी को लिया था. So I mean, with the West Indian connection, they might get Gudakesh Modi. I don't know. And last name Mohammad Shami. Now this is where things get interesting, भाई. मोहम्मद शमी का अभी न्यूज में आ रहा है कि SRH may release मोहम्मद शमी. As we know, his IPL was not very good. We know he's been facing injuries, but Mohammad Shami, on a given day, when he's in form, he's one of the most dangerous players on the planet. With his lethal swing, with his pace, or
डेथ बॉलिंग में भी शमी इतने अच्छे हैं. These all qualities and obviously the experience which he brings. Mohammad Shami is a very very good option. Now Shami could be released from SRH as we are hearing. ऐसी रिपोर्ट्स आ रही थी. If Shami comes into the auction, भाई ले लेना चाहिए, ऐसे पकड़ लेना चाहिए. Because Shami in the mini auction बहुत बड़े इंडियन प्लेयर्स नहीं आएंगे ऑक्शन में. यू हैड द चांस इन द मेगा ऑक्शन, आपने बर्बाद कर दिया ना. अगर अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके पास तो उसको ऐसा हाथों से लेना. शमी जैसा बड़ा प्लेयर नहीं मिलेगा मनी ऑक्शन में, इतना बड़ा इंडियन बॉलर नहीं मिलेगा. तो शमी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बॉलर. एंड द फैक्ट दैट शमी प्लेज फॉर बंगाल इन द डोमेस्टिक सर्किट, ही नोज द पिचेस देयर इन एंड आउट, कि स्टेडियम कैसा, पिचेस कैसे हैं, ग्राउंड कैसा है, कितनी स्विंग आ रही है, कितनी नहीं आ रही है, कौन से टप्पे पे फेंकते हैं बॉल. So Shami, with his experience and obviously because he plays for Bengal, could be a potential target for KKR, and that is the end, I guess. Yes, these are the auction targets. हमने ये सब डिस्कस किया है. And KKR is one of those teams which I feel that I'm very excited to see कि क्या करते हैं. And I'm मतलब मैं देखना चाहूँगा कि संजू सैमसन आते हैं नहीं. But as I said, I wholeheartedly believe that Sanju Samson is coming to KKR once again. Remember 2012 में भी खेला था, 2012 से 13 था, I don't remember. चांस नहीं मिला था संजू को, बट अब वो चाहते होंगे कि वो उनके पुराने प्लेयर वापस 10 साल से ज्यादा बाद वापस आ जाए KKR में. एंड बहुत सारे फैंस चाह रहे होंगे because if this player comes, he is going to solve a lot of problems of KKR with the wicket keeper batter, with the captaincy, with the potential Indian talent. Sanju Samson could be that player. So Sanju, I believe, is coming to KKR, and that was the discussion of KKR. Maybe शायद हम कल live आएंगे with CSK, and one person is watching. Thank you so much whoever is watching. I hope this increases in the future viewer count, and whoever has commented, thank you so much. This was our first live, possibly not the last, and पूरा डिस्कशन हमने केकेआर का किया है. इफ यू हैव जॉइंड नाउ, इफ यू हैव मिस्ड आउट, प्लीज रिवाइंड. बहुत अच्छी स्ट्रीम रही है, डिस्कस्ड अ लॉट इन डिटेल. सो इफ यू लाइक दिस कंटेंट, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, बिकॉज ऐसी एक्साइटिंग कंटेंट हम और लाते रहेंगे. एंड आई विल सी यू देन, शायद कल देखेंगे या फिर एनी अदर डे ऑन लाइव स्ट्रीम, जहाँ पे हम सीएसके के बारे में डिस्कस करेंगे. अनदर टीम which is interested in Sanju Samson. So then, thank you so much for watching and see you.